वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2016 के अवार्ड एनायत कार्यक्रम में फोटो कॉन्टेस्ट के विजेताओं को इनाम वितरित किए गए। देखिए इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। VNM Environmental Excellence Awards 2016 sponsored by Deepak Nitrite Limited, Responsible Care, co-sponsored by Mayur Dichem Intermediates Limited, Kiri Group of Industries and Lonson Kiri Chemicals Industries Limited, Future Full of Colors, Huntsman, Enriching Lives Through Innovation, Ami Life Sciences Private Limited, We Care for Environment, supported by IOCL Gujarat Refinery, Asahi Songwon Colors Limited, Elysium Pharmaceuticals Limited, Radio Partner 92.7 Big FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। अब हम बात करेंगे थर्ड, सेकंड और फर्स्ट प्राइज़ की। मैं रुक करूंगी थर्ड प्राइज़ की ओर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ट्रस्टी आधार हस्त, which is an NGO, Mrs. Sharmila Mahurkar, to kindly step forward to do the honors. इस साल इनकी ट्रस्ट द्वारा हज़ारों की संख्या में पौधे बांटे गए और वृक्षारोपण के प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए गए। और ये जो पौधे हैं, ये जागरूकता है वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्होंने पौधे बांटे हैं। जैसे कि गायत्री ने पहले ही कहा कि इंडस्ट्रीज़ तो रखनी है, जैसा कि सपना था मोदी सर का, पर उसके साथ साथ हमें पर्यावरण को कैसे बैलेंस करना है वो हमें ध्यान में रखना है। थर्ड प्राइज़ गोज़ टू मिस्टर महेंद्र परीख फ्रॉम मुंबई। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये बड़े ही जाने माने फ़ोटोग्राफ़र है और इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल प्राइजेस भी जीते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इन्होंने हमारे इस फ़ोटो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। कंग्रेचुलेशन सर। के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी Principal photographer from India Today, Mr. Sailesh Raval, to kindly step forward to do the honors. For doing the honors. The first prize for online photo contest, and I would request Company Secretary Deepak Nitrite Limited, Mr. Arvind Bajpai, to kindly step forward to do the honors. First prize goes to photographer from Ankleshwar, Mr. Rajesh Gandhi. First prize goes to Mr. Rajesh Gandhi from Ankleshwar. और ऑल इंडिया ऑनलाइन फ़ोटो कॉन्टेस्ट ऑन द थीम लाइफ एंड एनवायरनमेंट के सभी विजेताओं को एक बार फिर कंग्रेचुलेशंस। ज़ोरदार तालियां हो जाए उन सभी फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए और उनकी विनी फ़ोटोग्राफ्स के लिए। ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत कम मिलते हैं कि जैसे हम फ़ोटोग्राफी करते हैं, बट लाइफ और एनवायरनमेंट का कनेक्शन बहुत कम मिलता है और हमारा ऐसा व्यू भी नहीं होता है कि हम लाइफ और एनवायरनमेंट को कनेक्ट करें।
सो दिस फोटो कॉन्टेस्ट मैं लाइफ और एनवायरनमेंट को कनेक्ट करते हुए हूँ। आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैं 2 साल से कर रही हूँ, बट दिस टाइम मुझे कमेंडेबल प्राइज़ मिला। મારો જન્મ જ ગામડામાં છે એટલે હું ગામડાઓની ફોટોગ્રાફી કરતો હોઉં અને અત્યાર સુધીમાં મને 17 પ્રાઇઝ મળી શક્યા છે એટલે હું ગામડાની વન્યજીવો અને ખેડૂતોની એની ફોટોગ્રાફી કરતો હોઉં. It is my 6th year and every year I learn something more. स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अभी मेरा मेन जोनर हो चुका है. सो एवरी ईयर फॉर मी VNM स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कंपटीशन इज़ लाइक टू विन अ ऑस्कर अवार्ड. जिस टाइप का हॉस्पिटलिटी या जिस तरीके से सबको नवाजा जाता है, आई डोंट थिंक कि कोई और जगह पे मैंने देखा कि इतनी सारी क्या बोलते हैं इज्जत फोटोग्राफर को दी जाती है. सो इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज. आई एम सो ग्लैड. लास्ट टाइम आई वॉज अ कमांडेबल, दिस टाइम आई एम स्टूड एट 3rd. सो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी. इम्प्रूवमेंट हो रही है और नफीस भाई जो है उनके लिए स्पेशली बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि खाली सीनियर फोटोग्राफर, हम जैसे जो नए बच्चे भी आते हैं उनको भी साथ में फील्ड में रहते हैं, कुछ नई टिप्स देते हैं. 2011 की मुझे बात याद है जब मेरे पास पॉइंट एंड शूट था. दे सेड कि मैंने बोला कि सर ऐसे बड़े बड़े कैमरा है मैं कैसे करूँगा. तो उन्होंने बोला कि जंग में जब दुश्मन आमने सामने होता है तब पिस्तौल चलती है, तब गोला बारूद या टैंक नहीं चलती. सो दिस इज़ द स्पिरिट दे गिव अस and we grow more and more. So thank you so much VNM to give me such a nice opportunity. Thank you. VNMમાં અમે હર સાલ અમે આવીએ છીએ અને હર સાલ અમે પાર્ટ લઈએ છીએ અને હર સાલ કરતા રહો આપ. અને લાસ્ટ ટાઈમ બી સેકન્ડ પ્રાઇઝ મને આવ્યું, આ વખતે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આવ્યું. થેન્ક યુ તો VNM. 2011 से शुरू हुए VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स को वडोदरा शहर और आसपास की कई इंडस्ट्रीज सफल बनाने VNM को सपोर्ट करती रही हैं. उन्होंने VNM के इस प्रयास को सराहा. आपका ये प्रोग्राम सबके लिए एक मैसेज है कि भाई मीडिया भी अभी अपना एनवायरनमेंट को भी जो सब लोग नुकसान कर रहे हैं इसमें से वो भी अपने को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि हम बेटर हो सके. कोई डरे नहीं हो मीडिया से कि भाई गलत करने से वो लोग ऐसे कर रहे, वो नहीं है आपके यहाँ पे. और जितना हो सके इतना बेटर सब लोगों को एक अवेयरनेस आप लोग ला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. First of all, I thank you all the VNM team for this 6 excellence award. अभी जहाँ जगह मेरे को लग रही है कंपनी में वहाँ पे मैं ट्री लगा रहा हूँ. VNM का ये प्रोग्राम जो है ये आपको किस तरह से आप इसको देखते हैं? Congratulate Miss Gayatri Vyas and team of VNM that industries also, because lots of the pollution is doing by the industries itself, but also we are right now lots of technology are there and we are adapting the technology and save earth as well as save the industries. ये कार्यक्रम को देख के हमने हमारी कंपनी में भी अच्छा एनवायरनमेंट का ख्याल रखा है और हमने बहुत सारा प्लांटेशन भी किया है. हर साल हम ये प्लांटेशन भी कर रहे हैं एवरी ईयर. तो इससे हमारी कंपनी को भी अच्छा सीखने का मिलता है. हम हर साल यहाँ आते हैं, लोग नया नया जो करते हैं वो सीखते हैं. जैसे ड्रिप इरिगेशन का भी हमने देखा, वो भी हमने पिछले 1 साल में चालू किया है. हमने बहुत सारा प्लांटेशन किया है, तो इससे हमको भी फ़ायदा मिलता है. પહેલાં તો એટલું જ કહીશ કે કીપ ઇટ અપ VNM. બહુ સારો પ્રયાસ છે, સારો એફર્ટ છે એન્વાયરમેન્ટ માટે લોકોને કોન્શિયસ કરવાનો. અમને પણ આ અહીંયા ફંક્શનમાં આવીને ઘણો આનંદ થયો અને જે લોકોએ ઇનોવેટિવ સ્ટેપ્સ લીધા છે, સ્કૂલ છે, કેટલાક ફાર્મર્સ છે, બધા અમે પણ પહેલી જ વાર જોઈ રહ્યા છે, એટલે ઇટ્સ અ ગુડ એફર્ટ. टोटल एरिया हमारा जो फैक्ट्री है वो करीबन 27 एकड़ है. उसमें से 15 एकड़ से हमारा ग्रीन बेल्ट है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हम लोग प्लांटेशन किए हुए. नियर अबाउट 15,000 ट्रीज है. अच्छा ही है प्रोग्राम, अच्छा लगा. અમને આ તમારો VNMના જે પ્રયત્ન છે ઇન્ડસ્ટ્રી કેટેગરી પણ સામેલ કરી ગ્રીન વર્કપ્લેસ માટે એ ખૂબ સારો પ્રયત્ન છે. જ્યારે પબ્લિકનો એક ઓપિનિયન હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રત્યે કે એ ફક્ત પ્રદૂષણ કરતો હોય છે, જ્યારે આવા પ્રયત્નોથી લોકો સુધી પહોંચે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી પણ સારા કામ કરતી હોય છે અને એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શનના કામ પણ કરતી હોય છે અને એન્વાયરમેન્ટને રિલેટેડ વધારે પ્રયત્નો કરતી હોય છે. સર, પર્યાવરણને બચાવવા માટે આગળ શું કરશો? અમે લોકો ખૂબ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. અત્યારે અમે લોકો અમારા જે ગ્રીન વર્કપ્લેસ પરથી અમને જે એવોર્ડ આપ્યો છે, તો અમે લોકોએ અમારા ફેક્ટરીની પ્રિમાઇસીસમાં ગ્રીનરીમાં માટે અમે લગભગ 600 પ્લાન્ટ્સ આ સિઝનમાં પ્લાન્ટેશન કર્યું છે અને લગભગ 2000 પ્લાન્ટ્સ પ્લાન્ટેશન કરવાના છે.
અને ના અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ આજુબાજુના ગામમાં પણ અમે ગ્રીનરી ડેવલપ કરવા માટે પ્રયત્નો કરીએ છીએ, ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ અને ખેડૂતોને એમને પ્રોડક્ટિવિટી કેવી રીતે વધે એના માટેના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અમે લોકો કન્ડક્ટ કરાવીએ છીએ. વીએનએમ જે છેલ્લા 6 વર્ષથી જે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે અને આજે એમના જે સફળતા મળી છે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. મીડિયા જેનું માધ્યમ શહેરને લોકોના પ્રશ્નોને લઈને બતાવવાનું માધ્યમ હોય છે, પણ આજે એમને એક નવો પ્રયાસ જે કરી રહ્યા છે જેને લીધે એન્વાયરમેન્ટને ફાયદો થાય છે. આજે જે પ્રયત્ન એમને કર્યો છે તો જે ખેડૂત છે એ પણ ખુશ થયા છે આ પ્રોગ્રામને લઈને, કારણ કે એમને પણ એક પ્રોત્સાહન મળ્યો છે. જે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટને જેની વાતો કરી કે વીએનએમ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટનું વિરોધી નથી કે ઇન્ડસ્ટ્રીની વિરોધી નથી, પરંતુ તમે ઇન્ડસ્ટ્રી દેશની પ્રગતિની વાત કરી કે પ્રગતિનું એક માધ્યમ છે, પણ સાથે સાથે એન્વાયરમેન્ટનું ધ્યાનમાં રાખીને એ લોકોએ ગ્રીનરીને ડેવલપ કરવી જોઈએ. VNM Environmental Excellence Awards 2016 sponsored by Deepak Nitrite Limited, Responsible Care. Co-sponsored by Mayur Dichem Intermediates Limited, Kiri Group of Industries and Lonson Kiri Chemicals Industries Limited. Future full of colors. Huntsman, enriching lives through innovation. Ami Life Sciences Private Limited, We Care for Environment. Supported by IOCL Gujarat Refinery. Asahi Songwon Colors Limited, Elysium Pharmaceuticals Limited. रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM. सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ.